Namaskar. Today we discuss about section 206 1G of Income Tax Act 1961. Subsection 1G of section 206 requires tax collection on foreign remittance made under liberalized remittance scheme and on the sale of overseas tour program packages. The Finance Act 2023 brought substantial changes in the provisions related to collection of tax at source under section 206 1G. The Finance Act 2023 amended the provisions of section 206 1G effective from July 1st, 2023. Later on, in response to the comments and suggestions submitted by the stakeholder, the government decided to make changes to the Tcs provisions. The government has issued a press release dated 28th June 2023 announcing several changes to section 206 1G. Now, the Finance Act 2024 proposes to insert the sixth proviso to validate the collection of tax under section 206 1G in accordance with unamended provisions announced by the press release dated 28th June 2023. The sixth proviso provides that collection of tax at source during the period from 1st July 2023 to 30th September 2023 shall be in accordance with the provision of section 20C 1G as they stood on 1st July 2023. Now, we will discuss about the rates of TDS. In case of LRS for education financed by loan from financial institutions, the rate up to 7 lakh will be nil. After 7 lakh it will be 0.5. LRS for medical treatment or education other than financed by loan will be up to 7 lakh will be nil, 5% above 7 lakh. If we talk in Hindi, LRS जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है या एजुकेशन लोन के लिए जो फाइनेंस नहीं है उसमें 7 लाख तक निल और 7 लाख से ज्यादा 5%। एजुकेशन के लिए अगर एजुकेशन फाइनेंस्ड है बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से तो 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर 0.5% है इन केस ऑफ फाइनेंस में। LRS for other purpose nil up to 7 lakh, 20% above 7 lakh. Purchase of overseas tour program package 5% till 7 lakh, 20% thereafter. LRS अगर हम किसी अदर पर्पज के लिए है तो 7% नील है 7 लाख तक और 20% है 7 लाख से ऊपर। अगर हम बात करते हैं टूर पैकेजेस की फॉरेन के लिए तो 7 लाख तक 5% है, 7 लाख से ऊपर 20% है। नाउ क्वेश्चन इज हु कैन रेमिट फंड्स अंडर LRS? अंडर LRS ओनली इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर कैन रेमिट द फंड। कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, HUF आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एमिट ऑफ LRS। LRS की जब मैं बात करते हैं तो जो इंडियन है, इंडियन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, सिर्फ वही रेमिट कर सकते हैं LRS में। उसके अलावा कोई रेमिटेंस LRS में कवर नहीं होती है। व्हाट आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसेबल? ए रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन रेमिट अप टू एन एग्रीगेट ऑफ 2.5 lakh USD per financial year for capital account transactions. These are the capital account transactions which are permissible. Number 1, opening of foreign currency bank account abroad, acquisition of immovable property located abroad, overseas direct investment, overseas portfolio investment, extended loan to non-resident Indians. Being a relative, here relative means relative as per company law. अब इसको मैं अगर हिंदी में देखूं तो आपने अकाउंट बैंक अकाउंट खोलना है इंडिया से बाहर, प्रॉपर्टी खरीदनी है इंडिया से बाहर,
ओडीआई करनी है इंडिया से बाहर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया से बाहर, या किसी भी नॉन रेजिडेंट इंडियन को जो कंपनी लॉ के तहत रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है उसे हमने लोन एक्सटेंड करना है, तो वो हम $2.5 लाख तक पर ईयर कर सकते हैं। परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर प्राइवेट विजिट्स अब्रोड, टूर related expenses outside India, gift to resident outside India, donation to an organization outside India, person going abroad for employment, immigration abroad, maintenance of close relative abroad, business trip abroad, medical treatment expenses abroad, student pursuing studies abroad। $2.5 लाख तक पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए पैसे रेमिट हो सकते हैं एलआरएस में, करंट अकाउंट में। अगर किसी को बाहर घूमने जाना है नेपाल और भूटान को छोड़ के, टूर से रिलेटेड खर्चे कर रहे हैं इंडिया के बाहर, गिफ्ट करना है किसी जो रेजिडेंट इंडिया के बाहर का है उसको करना है, डोनेशन देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर है, इंप्लॉयमेंट के लिए कोई बंदा बाहर जाना चाहता है, इमिग्रेशन के लिए कोई बाहर जाना चाहता है, कोई क्लोज रिलेशन में कोई बंदा रिश्तेदार है हमारा उसकी मेंटेनेंस के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए कोई जाना चाहता है, मेडिकल के खर्चे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जाना चाहता है, कोई एजुकेशन को परस्यू करने के लिए आगे जाना चाहता है अब्रोड, तो उस सब में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ये सारे, और $2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर ये अलाउड है। When should tax be collected under section 2061G? There are 6 conditions to this. Number 1, the buyer is an individual. He should be a person resident in India as per FEMA, not as per Income Tax Act. Please remember, he makes payment to the authorized dealer for remittance of foreign currency under LRS or pays to a person for overseas tour program package. The remittance should be within the prescribed limit of 2.5 lakh USD. The remittance should be out of disclosed sources of income or asset. The remittance is not made for prohibited transactions or transaction allowed under approval route. अब क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इसकी क्या कंडीशंस हैं 206C की, तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी फॉरेन करेंसी खरीद रहा है वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में एज पर फेमा, नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वो पेमेंट करता है ऑथोराइज डीलर को, अंडर एलआरएस पेमेंट करेगा या टूर ऑपरेटर को पेमेंट करता है। रेमिटेंस 2.5 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए, $2.5 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। जो भी रेमिटेंस हो रही है वो डिस्क्लोज सोर्सेज से होनी चाहिए या डिस्क्लोज एसेट से होनी चाहिए। कोई भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन या वो ट्रांजैक्शन जिसको आरबीआई अप्रूवल रूट से अलाउ करता है उसके थ्रू नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रूट से होनी चाहिए, तब एलआरएस है। Now question arise, can a remittance for education exceed 2.5 USD? First of all, an individual has to submit form A2 to the authorized dealer. The form requires the individual to declare the purpose code. For education, there are 2 codes. One code is S0305, that is travel for education, including fees and hostel expenses. S1107, that is fee for correspondence courses abroad. Section 206 provides relaxation in the rate of TCS if remittance is for the purpose of education. The purpose is basically the intention. The immediate purpose is something. If the purpose of remittance has the immediate and close connection with the remitter education, the relaxation in the rate and the threshold benefit should be allowed. AD may not allow the benefit if any code other than the mentioned code is selected for the remittance. अगर मैं कहूं कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो सिर्फ, और एजुकेशन के लिए नहीं, खर्चे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो भी खर्चे जिनका पर्पज एजुकेशन है, उनको भी वही रेट मिलेगा 0.5% वाला या 5% वाला। और $2.5 लाख से अगर ज्यादा भी है, अगर खर्चा हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन,
तो ऑथराइज डीलर उसे अलाउ करे। नाउ क्वेश्चन अराइज whether the TDS provision apply if an entity bears business trip expenses on behalf of the employee. When an entity sends an employee to a foreign country for a conference, seminar, training, and expenses are borne by the entity, such expenses shall be treated as residual current account transactions outside the LRS. These are not covered under LRS. TCS provision under section 206C1G shall not apply. However, other TDS provision can apply. अगर कोई एंटिटी अपने किसी इंप्लॉई को बिजनेस ट्रिप पे इंडिया से बाहर भेजती है तो क्या टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि इंप्लॉई को बाहर भेजना एलआरएस के अंदर कवर नहीं होता है, इसलिए 206C1G अप्लाई नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन इज whether the TCS in case of remittance of mandatory expenses are what? LRS authorized dealer to release foreign exchange up to USD 2.5 lakh or its equivalent per financial year without requiring any estimate from the hospital or doctor. If the remittance outside amount exceeds the above limit, AD may release the foreign exchange under general permission based on a estimate provided by the doctor in India or a hospital or doctor abroad. Further, an amount of rupees up to 2.5 lakh USD per financial year is allowed to a person for accompanying as an attendant to a patient going abroad for medical treatment or checkup. As these remittances can be said to be made for the purpose of medical treatment, the lower TCS rate and the threshold benefit may be allowed. The person making the remittance should choose code S0304 travel for medical treatment, S1108 health services payment towards services received from hospitals, doctors, nurses, paramedical and similar services. अब कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है इंडिया से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसको $2.5 लाख एक साल में एक बंदे के लिए अलाउ है, भले ही कोई एस्टिमेट हॉस्पिटल से मिला या नहीं मिला है। अगर ये लिमिट 2.5 लाख से ऊपर बढ़ जाती है तो जो ऑथराइज्ड डीलर है वो जनरल परमिशन के बेस पे एस्टिमेट इंडिया से या बाहर के डॉक्टर से या हॉस्पिटल से लेके उसको रिलीज कर सकता है फर्दर फंड्स को भी। और ये जो 2.5 लाख की लिमिट है, जो पेशेंट है, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट जा रहा है उसके लिए भी सेपरेट अप्लीकेबल है। और जो रेट है 5% वाले, ये रेट अप्लाई होंगे इस पे भी, अटेंडेंट पे भी अप्लाई होंगे। और ना सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, जो दूसरी सर्विसेज भी आप लेते हो हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, नर्सिस से, पैरामेडिकल से, उन सब पे भी 5% के ही रेट अप्लाई होंगे। नाउ क्वेश्चन अराइज, आर TCS provisions applicable if the remittance is made from the borrowing? The answer is yes. TCS provision will apply even if the remittance under LRS is made out of borrowings. If the borrowing are in the nature of education loan from a bank or financial institutions, the tax shall be collected at the rate of 0.5% on the amount in excess of 7 lakh. However, the LRS prohibits the banks from extending any credit facility to the resident individual to facilitate remittance for capital account transactions under the scheme. Hence, the question of collection tax does not arise. क्या टीसीएस प्रोविजन उधार लेने के ऊपर, जो उधार लेके पैसे रेमिट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं बाहर, उस पर लगता है या नहीं लगता है? इसका जवाब है हाँ। अगर एजुकेशन लोन लिया है किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसके ऊपर टीसीएस 0.5% के हिसाब से लगेगा 7 लाख से ऊपर। लेकिन एलआरएस प्रोहिबिट करता है बैंक को
किसी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर किसी को उधार दिया जाता है तो उसको एलआरएस प्रोहिबिट करता है। इसलिए जब एलआरएस ही प्रोहिबिट करता है तो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो नहीं सकते। The next question comes to the mind is, should the TDS provision apply if the remittance is made to FATF identified non-cooperative countries and territories? The answer is LRS is not applicable for capital account remittances to the countries identified by FATF as non-cooperative countries and territories as available on FATF website. The TDS provision shall not apply. क्या जिन कंट्रीज को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है उनको पैसे भेजते हैं उस कंट्रीज में तो टीसीएस लगेगा कि नहीं लगेगा? ये एलआरएस के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आते ही नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन आता नहीं है, इसलिए टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। व्हाट इफ द अमाउंट रेमिटेड अंडर एलआरएस कुड नॉट बी स्पेंट? However, any amount received, realized, unspent or unused foreign currency unless reinvested must be repatriated within 180 days from the date of receipt, realization, purchase, acquisition or date of return to the India as a. If the tax has been collected at the time of remittance, the authorized dealer is not going to refund TCS amount at the time of repatriation back to India. The refund of TCS can be claimed only by filing income tax return. क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि जो पैसे हमने एलआरएस पे काटे और अनस्पेंड रह गए, उस पे जो टीसीएस कटा है, क्या वो वापस हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। वो जो टीसीएस कटा है वो हमें अपनी रिटर्न भर के उस पे क्लेम करके उसे वापस लेना है। Thanks for watching my video.